So good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Please turn on your camera. Good morning, ma'am. Oh, you can turn off your camera. So in the last term, we were discussing about the raster data and vector data. Okay. So, we have started the spatial data modeling, and in the spatial data modeling, the basic step for, as you can see in this diagram. So as you can see in this diagram, first of all, we have to decide what will be the spatial data that we are going to use in our GIS project or which we are going to model. So once the spatial data is selected from the real world, the second step is about how that spatial data is going to be modeled. Two options are present, raster data model and vector data model. We have started the discussion of raster data model, and once this raster data model is completed, the next will be the vector data model. So the third step, once you have taken the spatial data, defined the entity and selected the spatial data model, which is a conceptual data model, the last step is we have to give a physical data model, means we have to give some spatial data structure. There are different ways to store the raster data, different ways to store the vector data. So therefore, we have to decide, the main decision is regarding the raster and vector. So in general, from human perspective, the geographical world can be seen as a discrete entities, or it can be seen as a continuous fields. So discrete entities often simply referred to as objects, and they are distinguished by their independent and localized existence. They are identified as individuals before any attribute they may process. You can take you can see the examples of discrete entities like buildings, street, water, towers, and other things. And on the other hand, if you see the continuous field, then it will describe the spatial variation of a geographic variable in a certain space-time frame. So most fields are scalar in fields, like they will have one value at a given location, such as elevation. So if we have such type of data which will be represented as a field like an elevation, or it can be a temperature, then we go for a raster data model. Sometimes fields are vector fields, like they can be a wind, in which the direction is important. So both objects and fields are represented on a topographic maps. So in the topographic maps, you can see that the discrete entities like towns, roads, lake, they are marked by point, line, polygon, and the continuous field may be portrayed by contour lines, different types of shading, and other things. So there is no single spatial data model that can accommodate both the views. Means
that can use object and field perspective in a single model. So it is because object and field based conceptualizations require different set of data objects to portray the geographic space. Therefore, spatial data models designed to represent discrete entities use point, line, polygon as a geometric primitives to form spatial data object. And in case of when we use any discrete model which means vector data model, in that case all the geographic entities will have a well-defined boundaries over there. Okay? Such boundaries, often represented with point, line, polygons, do not normally exist in nature, but are practical for any type of engineering work or if we are doing any administrative work or property related work. In that case, a well-defined locations will be helpful. But when we go for the first one, which is the raster data, we have a field which will give you a continuous representation. There will be a certain variable and its value will be present at every place. So through that one, we can represent the whole area. After that, we have seen this thing that how the same thing will be represented in a raster view and how it will be represented in a vector view. So both have different ways of representation, and this example is giving you the discrete entities like hotel, ski lift, forest. So these all are the discrete things. But when we talk any like feature like temperature or elevation, in that case, the raster view will have a certain cell value at every place. Then we have seen the raster data modeling. In the raster data modeling, the concept of tessellation was given. Okay, what is tessellation? Okay. Yashovardhan? Set of data spatial models. Yes. Yashovardhan? Yes, ma'am. What is tessellation? Ma'am, it is a data spatial model. Please repeat. It is a type of data spatial model. No. What is tessellation? Okay, suppose if I say I will tessellate this area, what will you interpret from this thing, from this sentence? Okay. Next, Vibham. Yes, ma'am. Means Yes. partitioning or dividing the complete space into a you can say smaller cells. Mutually That's called a exclusive. mutually exclusive Yeah, smaller the cells. correct term is mutually exclusive. Yes, ma'am. Okay. Yes. So this is what the tessellation is. Okay. When you go for a raster representation, you need to divide a complete space into cells. As you can see on the screen, the complete space is divided into cells. This is called the tessellation. Okay. So basically, when we use the raster data model use tessellation. And when somebody asks you what is tessellation, the correct answer is partitioning of space into mutually exclusive cells that together make up the complete study space. It is necessary to divide the space, and space can be divided into so many different ways, isn't it? It can be divided like a square grid. It can be represented by the hexagonal cell, by the triangular cells. There are so many options over here. Then we can go for the irregular divisions also. Okay. So several options are available for the tessellation, but in general, when we use the raster data, we go for the square cells tessellation, or there are the option for the irregular. We will learn about the irregular tessellation later. But right now, the raster data that we use to represent any data inside GIS, it uses square cell, because inside the computer you cannot store anything in hexagonal or triangular shape. The pixel size is considered as a square.
So that's why in general, we say that the raster data is a gridded data. Okay. Although it can be of other shapes, but in majority of time, it is in a square shaped cells. Then in raster data, with each of the pixels, some attribute value is associated. When you use the vector data, the amount of information which is associated as an attribute is very large. Any number of attribute can be associated with the vector data, but not in case of raster data. Okay. So theoretically, we say that only one pixel value can be given, or there can only be a single cell value. And later on, it can be summarized like this way. Then we have discussed about the raster cell and pixels. So next is Jayashree. Yes, What ma'am. is the relationship between the cell dimension and cell volume? As the cell dimensions decreases, the cell volume should be increased as a square. Yes. And why there is a trade-off between the positional accuracy and cell volume? This trade-off concept I did not get, ma'am, after referring after the class. Okay. Next, Sunil. Sunil, why it is said that there is a trade-off between cell size or cell volume and positional accuracy? I'm not getting your audio. Next, Sumit. Ma'am, when we use we use smaller cells, we can provide a large number of detail, but the large number of detail will take a large volume of space, large memory sets, and that is why if we use a less number of cells, that will basically use less amount of data, less amount of memory. Okay. So there is a very simple relation between both. Like first thing is that the cell dimension means what will be the length of a side or what will be the length of the edge. If you decrease the length, like if you half the length, if you reduce the cell dimension by half, there is square means 2 times increase. Square means 2 into 2, that is 4. 4 times increase in the number of cell. If you reduce the cell dimension say by 4, it will 4 square means 16. There will be 16 times increase in the number of cell, as you can see on the screen. As you can see on the screen, A, B, C, there are 3 figures given over here. Between A and B, cell dimension is reduced by half. Between A and C, cell dimension is reduced by 4. So you can observe that corresponding to the cell dimension change, the number of volumes is increasing. There is a substantial increase from 4 to 16 to 64. So this is what the relationship between the cell dimension and the cell volume. Next thing is there is a trade-off between cell size and data volume. Why? Because when we try to reduce the cell size, the positional accuracy will improve. What is positional accuracy? When we talk about a raster, suppose there is some point. Okay? Ideally, point does not have any area, isn't it? When we talk about the point, it is a zero-dimensional entity. It will not cover any area. But when we talk about the cell inside the raster data, even a point will cover some area. When we say that at a particular point, at a particular xy or at a particular latitude, longitude, there is something present, like suppose there is some tree. So it will not be located at a single point, but it is basically located inside an area. Are you getting this point?
Why I'm saying this thing? Because in case of raster data, the smallest unit is cell, and that cell is covering an area. Okay. On the contrary of this, when we talk about the vector data, point means point, it just take a location, it will not cover any area. If you zoom in, like, I will show you this example. On the screen, you can see that this one is a raster data. You can observe the grid over here on the screen. So if I am zooming in, automatically the size of the pixel is increasing, isn't it? The size of the pixel is increasing as I zooming in. Now let's see the same thing on a point. Okay. Suppose I zoom in into some point. I am increasing the zoom, I am zooming in, but the point size is not increasing. It is just taking a point. It doesn't matter how much I zoom into it. So what we were discussing about positional accuracy. And in case of raster data, when we say that there is a cell, there is a point, it will actually not a point, it is also going to cover some area. Like for 25-meter cell, it will cover an area of 625 square meter. For 100-meter cell, it will cover an area of 10,000 square meter. So that's why if you place any of the point, there will be a deviation of that much area. For example, for a 25-meter cell, it is usually said that half of 25 is 12.5 meter deviation from the position. That's why if you reduce the cell dimension, the positional accuracy starts to improve. But as you decrease the cell dimension, the volume of cell will increase. And if the volume of the cell will increase, the size will increase. If you remember in the last time I have shown you this example. I have two images. One is of Allahabad. Okay. Both of the images are of Allahabad. One is of the Landsat satellite and another one is of Sentinel satellite. So when I am clicking on the properties of the Sentinel data, when I'm clicking on the Sentinel data size, see. So when I'm clicking on the Allahabad Landsat image, the size is coming as 1.39 GB. And when I am clicking on the Sentinel image, the size is coming as 3.18 GB. What was the resolution? For the Landsat, what was the resolution? And for the Sentinel, what was the resolution? 30 meter for Landsat and 10 meter for Sentinel. So this is what the resolution is. In the image, we use the term spatial resolution. In the raster data, we use the term cell dimension. So this is what the problem is, or this is what the trade-off between the cell dimension and the cell volume. If you try to go for a better accuracy, the size will increase, and if you want to reduce the size of a file, the dimension will increase. That will ultimately affect the accuracy. So this is what the trade-off. I hope it is clear to everyone now. So I think so I have to start from this point. I have just started a little bit of this one. So this is about how the raster data is going to get stored inside the system. First of all, we have to decide what will be the size of raster data, how many rows will be there, how many columns will be there, and obviously what will be the cell size. Okay. So most of the time, when we practically do these things, most of the time we do not generate the raster data. We generate the vector data. We acquire the raster data from other sources, like, if we are taking any image, then it will be a raster data. If you are taking the elevation, again, it will be a raster data. So most of the time,
the raster data is obtained from somewhere else. And even if we have to generate a raster data, we basically do a conversion. There is a functionality of rasterization and vectorization in the software, whichever software you are using, QGIS or ArcGIS. In all the softwares, we have this functionality through which we can convert any of the data from raster to vector or from vector to raster. Both the options are available over here. Like on the screen, you can see I have opened conversion tools from raster, like from raster to point, polygon, polyline. So what is this conversion? Raster to point, raster to polygon, and raster to polyline. This is rasterization or vectorization? Vectorization. 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 It is obvious, isn't it? Raster to point means raster to vector. Raster to polygon, again it is vector. Raster to polyline, again it is a vector. So what we are doing? We are doing vectorization over here. We are converting the raster data into a vector form. And another option is to raster. So in this, point to raster, polygon to raster, polyline to raster, or simply feature to raster. So what we are doing, it is reverse of that one. We are converting vector data into a raster. So this is called rasterization. Many times, when you're performing any sort of analysis, most of the time, like suppose you are performing overlay analysis. Later on, we will learn about the overlay analysis in very detail. But when we perform overlay analysis, which is one of the, you can say, almost always we use some sort of overlay when we are performing any analysis. When we are doing the overlay, you cannot overlay raster with vector or vector with a raster. The data model should be same. All the data, either they all should be raster or they all should be vector. You cannot combine, you cannot integrate a raster with a vector. In that case, many times we need to convert our data into a common format. Like suppose if you have an elevation and if you want to integrate the elevation with the school location. So you have to convert any one into, or you have to convert both the data into a common data model, like either both raster or both vector. And whenever we are performing such type of conversion, we are basically introducing error in our data set. Okay, so when you are converting vector to a raster, you are introducing an error. Why? Ma'am, because vector data is independent of resolution. Yes, the same thing. What we have just discussed about the positional accuracy. When we talk about the raster data, and if you are converting a point into a raster data, if you are converting a school into a raster data, in case of vector, it is just a point. But when you are converting it into raster, it will cover an area equivalent to the cell dimension. According to the cell dimension, suppose it is a 30-meter resolution, so it will cover an area of 900 square meter or whatever size you are taking of the cell. Accordingly, the data has to be changed into that one. That's why whenever you are doing such type of thing, even reverse of that one, if you are converting raster into a vector, it will also introduce error. In GIS, it is said that whenever you perform any analysis, always check whether you are introducing any error or not. Okay. Even there are so minute things occurs that if you do not take care, the error will get introduced in your data set. Like I would like to share one of my experience. Once a student was performing a clipping operation. You people also have done the clipping operation, isn't it? So he was clipping the raster data with the help of a vector shape. So when you're performing a clipping operation with the help of a vector polygon, rest of the places is okay. What will happen at the boundary place where the vector data is intersecting the raster data? No? In that case, suppose this one is 1 pixel and there is one line is or one polygon is going around it.
So wherever there is a boundary of the polygon, it is a chance that not a complete pixel will get clipped. So a partial pixel will get clipped. Are you getting this thing? Ma'am, your Because voice is breaking, ma'am. voice is breaking. Okay. Just wait for 1 or 2 minutes. I will start it again. So my audio is okay now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. As you can see on the screen, the thing that I was just telling you, that when you have a vector data, okay, so this, okay, I will change the color. You can see on the screen that there is one yellow color line. Okay. So this yellow color line is vector data. Suppose if I try to clip this raster data by this yellow color. So suppose if I try to clip this raster data with this blue color line, see what is happening over here. The boundary pixels are not completely covered, they are partially covered, isn't it? So when you perform the clipping of such type, it will introduce an error. Now, it is not always necessary that it will impact your result. Sometimes it depends upon which type of analysis you are performing. It may or may not affect your output. So this is how the error get introduced by when you are doing any sort of analysis. Although we were very clear that no, I am not doing anything wrong. The procedure was completely correct. Still, there was some error coming when student was performing further analysis. So later on, we got to know that what was occurring over here, that basically when the clipping operation was performed, the boundary pixels are not completely covered. As you can see on the screen over here also, that the boundary pixels are partially clipped by the vector data. So this has introduced the error. So this is what I was trying to tell you, that whenever you will do any sort of analysis in the GIS, whether it is a data creation, whether it is any analysis, always check whether you are introducing any error or not. You may not be aware, but you are introducing some error. Okay. So now coming, इसमें हम yes, एरर को कंसीडर नहीं करते हैं क्या कह रहे हैं? मैम। जैसे कि आपने जो क्लिपिंग किया, क्लिपिंग बाय मास, तो मैम उसको जब हाँ। जूम किए तो उसमें तो काफी मार्जिन दिखी, तो मैम जो एरर है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। नहीं, जैसा आपको बता रहे हैं कि आपका डिपेंड करता है कि क्या पर्पस है आपकी काम का। अगर आपके काम में बाउंड्री लोकेशन से इस तरीके का अगर स्लाइट एरर आ रहा है, आपके आउटपुट में अफेक्ट कर रहा है कि नहीं। सपोज आप लैंड यूज लैंड कवर एनालिसिस कर रहे हो, बाउंड्री के कुछ पिक्सल में इस तरीके का एरर अगर आ भी जा रहा है तो भी उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। अगर सिंपली आप एक एनालिसिस कर रहे हो कि लैंड यूज लैंड कवर में ओवर अ डिकेड 10 सालों में कितना अंतर आया, जैसे 10 साल पहले इलाहाबाद में कितना अर्बन एरिया था, 2010 में कितना था और 2020 में कितना हो गया। सो 10 साल में अर्बन एरिया कितना बदल गया। अब इस केस की एनालिसिस करते टाइम अगर इस तरीके का थोड़ा बहुत अगर एरर रह भी जा रहा है तो वो हमारे रिजल्ट को अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। एक नेग्लिजिबल एरर इंट्रोड्यूस होगी जो कि हमारे लिए ओके रहेगा। लेकिन सपोज अगर हम जैसे सपोज एक स्लूथ मॉडल रन कराते हैं, अब वो स्लूथ मॉडल इसके ऊपर रन कराने चलेंगे तो वो आगे का प्रोसीजर ही नहीं करेगा। वो बोलेगा कि जब डेटा का अगर आप दो डेटा सपोज आप अलग अलग ईयर की इमेजेस लेकर के क्लिपिंग करा रहे हैं, किसी में क्लिप अलग तरीके से होगा, किसी और में अलग तरीके से, वो बोलेगा कि डेटा साइज मैच नहीं कर रहा है। तो ये
बहुत माइनर एरर है, लेकिन वहां पर डेटा साइज मैच नहीं कर रहा है और इस कारण से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो वहां पर हमको इसका करेक्शन, इसका ऐसा नहीं कि करेक्शन नहीं होता, इसके कुछ रेमेडियल स्टेप्स भी होते हैं, उनको किया जाता है। कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं जिससे कि कंप्लीट पिक्सल क्लिप हो, ना कि पार्शियल पिक्सल क्लिप हो। तो वहां पर हमें देखना पड़ता है कि एरर इंट्रोड्यूस कैसे हो रही है और वो कितना हमारे काम को असर कर रही है। माइनर मिस्टेक हो रही है, माइनर या नेग्लिजिबल एरर्स आ रही है, तो उसको ओवरलुक कर दिया जाता है। लेकिन अगर मेजर अंतर आ रहा है तो वो फिर उसको रिजॉल्व करवाया जाता है। मैम मैंने इसको किया था मैप पे मास्क से। मैम जब मैंने सबको एक साथ स्क्रीन पे लाया तो मैम जब जूम किया तो बीच में कहीं कहीं गैप था मैम। जैसे कि जब जूम किया तो कहीं कहीं मैप में थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा था। तो मैम उसे क्या मतलब उसको भी कंसीडर कर लेते, नॉर्मल ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए मतलब प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप एक बाउंड्री निकाल रहे होंगे, उसमें शायद आप उसकी बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके का काम करते हो और बहुत हल्का फुल्का अगर अंतर आ रहा है, अगेन पर्पस क्या है वो देखना पड़ता है। अभी आप लर्निंग पर्पस के लिए उसको कर रहे हैं कि डिजिटाइजेशन कर रहे हैं और उतनी एरर आ गई, तो हम नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा प्रोसेस आप रिपीट करो। लेकिन वही काम अगर कोई स्टूडेंट अपने थीसिस के लिए कर रहा होता, तो हम डेफिनेटली कहते हैं कि इसको देखो, आपने कहीं ना कहीं जियो रेफरेंसिंग में गलती करी है। जो स्लाइड गैप अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है और आप क्लिपिंग करते टाइम वहां पर जरूर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंड दे रहे होंगे, मिन मैक्स, है ना। तो वहां पर मिन मैक्स आपने एक्सटेंड दिया, वहां तो गलती नहीं हो सकती आपसे। जो गलती ले दे करके इसमें समझ में आ रही है कि अगर स्लाइड गैप दो टोपोग्राफिक मैप्स के बीच में मोज़ैकिंग के बाद बंद करके आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें शायद आपने जियो रेफरेंसिंग में कुछ मिस्टेक करी है। या हो सकता है कि क्लिपिंग देते का जब आप वैल्यू दे रहे हो वहां पर कुछ आपने हल्का बहुत मिस्टेक कर दिया और स्लाइट मिस्टेक वैल्यूज को, डेसिमल वैल्यूज को देने में कर दिया हो, उससे भी आ सकता है। Ma'am, Yes. ma'am, we consider vector data as a independent of resolution. So should we take it as a merit of a vector representation or a demerit? Repeat the question. Ma'am, as we know, vector data is independent of resolution. So should we take a vector representation as a like resolution as a like vector representation? It is a merit of a vector representation or demerit, that it is a independent of a resolution. No, you cannot say merit or demerit exactly. Basically, it is a different form of representation. Okay, when you talk about the resolution, or basically you're talking about the cell size, so both are the different way of representation. If you try to go for a discrete object representation in a form of raster, certainly the presence of resolution will negatively, adversely affect the output. Like the example that I was giving you of the school, that if you try to convert the school as a vector data into a raster form, in that case what you are doing, you are giving some area to a point, because when you are converting it to a raster, even for a single cell there will be a certain area. So conversion of such type of discrete entity into raster format, it will introduce error. So in that case the cell dimension is a problem. In case of vector, this one is a good thing because point means a point over there. It is just a location. But it is not always a good thing. If you have a continuous surface, you have to go for a raster data representation. Like image is one of the very, very important source of data in GIS and remote sensing studies. So if you do not have the resolution over there, or if you do not have a raster data, basically it is a raster data. So if you do not have a raster data, you cannot have the image. So this is what the thing is. Okay, okay. We have already discussed this thing in the previous session. So there are 3 steps: entity model, cell values or pixel values, and then there will be a data structure like this. Another example which was given was this one. Like first we will create an entity model, then assign the cell volume, then give the file structure. First line is important because it will tell you the number of rows, number of columns, and number of entities. And from the second line onwards,
all the lines are giving the cell values. Since the size of the raster data is very large, okay, therefore we need to do the data compression. So we have to start from this point onwards, that we need to perform the data compression. And data compression means basically we will try to reduce the size. Okay. You have just seen the size of the data set, of the Landsat data, of the Sentinel data, whichever data you want, you can see the size. Okay, like if I take the example of California again, you can see the size over here again. So number of rows is this much, number of columns is 1512, and you can think about number of cells that are used to form this particular data. It is 1468 cross 1512. Okay. So large number of data set will be present over here. Therefore, we need to perform the compression. The very first compression method is run length encoding. It is a very simple manner of doing the compression. So first see the example and try to learn by yourself what is happening in the run length encoding. A very simple method of data compression. You need to see this third one. The first entity model is okay. There is no problem in that one. There is some entity which is present. Then it is converted into a cell values. This one is also okay. The third rectangle, this one is important. This one is the file structure. Okay. So instead of previous file structure, okay, if you compare with the previous one, this one is the previous file structure. Write it down in a copy. This file structure is for uncompressed data. Just write it down so that you can compare both the things. Now let's see what will happen in the compression. This one is the uncompressed file. Okay. So let's see what will happen in the compression. So see, this one is the compressed data file. See the difference in the file structure and try to learn how it is, what is happening over here. So this run length encoding is doing the data compression on a row by row basis. First of all, the value of a cell is written, like if you note down the very first row, it is all zeros. Okay. So value is 0, comma, number of cells that are having 0. So all the 10 cells are having a value 0. So it is 0, comma 10.
After that, you will move to the second row. Okay. In the second row, you will write 0. How many consecutive zeros? 3. Okay. So 0, comma 3. After that, there is a series of ones. So you will write down 1. Then there are 1, 2, 3, 4, 5. 5 consecutive cells have the value of 1. So 1, comma 5. Then 0, 0. 2 consecutive zeros. So 0, comma 2. Next, we will move to the next line. 0, comma 3, 1, comma 6, then 0, comma 1, and so on. So write it down, the file structure by yourself, how the run length encoding is generating the data. If anyone has any confusion, you can ask. You just need to write down the cell value and the consecutive number of cells with the same cell value. मैम फर्स्ट वाला कैसे रहेगा मैम 10,10,1 नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ एंटिटीज, ये सेम है जो आपने प्रीवियस फाइल स्ट्रक्चर पढ़ाया गया, ये सब में वही सेम आ रहा है। देखिए, ये सबसे पहला फाइल स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो पहली लाइन होती है ये हेडर होता है फाइल का। इसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ एंटिटीज 10,10,1 लिखा गया। इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल को अगर आप देखें, जिसमें 3 एंटिटी थी, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट कलर से 3 एंटिटीज को यहाँ पर दिखाया गया था। आप उसके सेल वैल्यूज को भी देखिए, 1, 2, 3, 3 अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं। इसका फाइल स्ट्रक्चर देखिए 10,10,3। इस तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है 10,10,1। हेलो मैम। यस मैम हेडर को सीधा 10,1 से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से यूज होगा, तो 10,10 तो एक, और अगर खाली 10 लिखे तो एक ही बात है। नहीं, कोई स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। अभी आपको कैलिफोर्निया वाले एग्जाम्पल में आपको दिखाया था, वहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल थे। तो रास्टर डेटा स्क्वायर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। सेल जो होंगी वो स्क्वायर होंगी, वो कभी दूसरे शेप में नहीं आएंगी। सेल जो होगी वो स्क्वायर ही होगी, लेकिन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकता है, वो इक्वल। जैसे इस केस में तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, और रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाया गया था। एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, नंबर ऑफ रो कॉलम्स 1468, नंबर ऑफ रोज 1512। तो ये सेम होना ये कोई जरूरी नहीं है। इसका सेम होना कोई जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी करेंगे। जहां पर जैसे कि इस तरीके का देखिए शेप जब आता है, यहाँ पर एक चीज होती है, जैसे आप ये देखो, इसमें जो है डेटा सब जगह के लिए नहीं है। ऑल्दो एक स्क्वायर, सॉरी, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर फॉर्म होगी। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी कैलिफोर्निया के लिए, वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, लेकिन हर जगह पर डेटा हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए, जब हम क्लिक कर रहे हैं ऐसी जगह पर, पिक्सल वैल्यू क्या लिख करके आ रही है? नो डेटा। ठीक है, जब हम बाहर देखिए, हर जगह नो डेटा नहीं आ रही है। हम जब बाहर पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए मेरा अगर कर्सर का पोजीशन आप देख रहे होंगे, वो बहुत दूर है, कहीं आउटसाइड में है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। लेकिन हम जब इसके एकदम पास में ले जाकर के, जब हमने अपने कर्सर को एकदम बाउंड्री, क्योंकि यहाँ तक अगर आप इसका देखिए, इसका शेप कुछ इस तरीके का होगा ना। अब यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हम कहीं भी क्लिक करेंगे, क्योंकि
सो इस बॉक्स के अंदर अगर हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो वैल्यू उस रास्टर की उनको देनी पड़ेगी। इसीलिए जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पिक्सल वैल्यू नो डेटा लिख करके आती है। जहां पर कोई भी सेल को वैल्यू नहीं दी गई वहां नो डेटा लिख करके आ रहा है। वहां रास्टर है, जो रास्टर का ग्रिड डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम से, वहां पर पिक्सल वैल्यू कुछ नहीं है, इस कारण से वहां नो डेटा दिया गया है। लेकिन हम आउटसाइड दी पिक्सल, आउटसाइड दी रास्टर ग्रिड हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी वैल्यू वहां पर नहीं आ रही है। आई होप जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं हम वो शायद क्लियर हो रही हो सबको, कि रास्टर हमेशा एक या तो स्क्वायर शेप में रहेगा या तो एक रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा। स्क्रीन में दिया गया फिगर जो है कैलिफोर्निया स्टेट का, वो एक रैंडम शेप में है। ये कोई एक रेगुलर शेप नहीं है, रेगुलर स्क्वायर या रेगुलर रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है, ये एक रैंडम शेप है इसका अपना, इर्रेगुलर शेप में आ रहा है। तो इस इर्रेगुलर शेप को भी अगर हम जब रास्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रास्टर की एक ग्रिड बनाएंगे जो कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की होती है। अब जहां पर ये कैलिफोर्निया स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन स्टिल रास्टर तो है वहां पर, उस केस में हम क्या करते हैं, वहां पर हमें इस तरीके की नो डेटा की वैल्यू वहां पर मिल जाती है। और कोई कंफ्यूजन है इसमें रन लेंथ इनकोडिंग में तो आप पूछ सकते हैं। रन लेंथ इनकोडिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम लोग रिवर्स कन्वर्जन बहुत इजीली कर सकते हैं। रिवर्स कन्वर्जन मींस अगर आपको फाइल स्ट्रक्चर दे दिया जाए, ओके, अगर आपको ये थर्ड वाला जो यहाँ पर ये फाइल स्ट्रक्चर बना हुआ है 10,10,1 ये पूरी फाइल स्ट्रक्चर दे दिया जाए और तब आपसे बोला जाए इसको आप रास्टर इसका निकालिए, बनाइए, बना लेंगे? बहुत सिंपल है इसको बनाना। तो इसमें बोथ कन्वर्जन पॉसिबल है। आपको रास्टर डेटा दे करके उसका कंप्रेशन डेटा भी कराया जा सकता है, रन लेंथ कंप्रेशन कराया जा सकता है, एंड रिवर्स डीकंप्रेशन कंप्रेशन के लिए भी बोला जा सकता है कि आप फाइल स्ट्रक्चर, इसकी कंप्रेस्ड फाइल स्ट्रक्चर ये है, इसको अनकंप्रेस करके आउटपुट दिखाइए। ओके, सो सब लोग कर लेंगे इसको बोथ वे, कंप्रेशन एज वेल एज डीकंप्रेशन। यस मैम। Yes, ma'am. Okay then. Next topic is block coding. Okay. ब्लॉक कोडिंग में क्या किया जाता है? ब्लॉक कोडिंग में ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। ब्लॉक्स मींस 3x3, 2x2 इस तरीके के स्क्वायर बनाए जाते हैं जब हम लोग ब्लॉक कोडिंग करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए ब्लॉक कोडिंग करते टाइम अगर लेफ्ट मोस्ट एंटिटी मॉडल को देखिए, वहां पर अगर आप कोई ब्लॉक बनाना चाहेंगे तो सबसे बड़ा कितने साइज का ब्लॉक बनेगा? अगर आप सपोज 5x5 लेते हैं, 1 2 3 4 5, यस, सो 5x5 का लेते हैं, पहली रो के लिए ठीक है, दूसरे के लिए ठीक है, तीसरे पे जैसे ही आते हैं यहाँ पर आपको एक विदाउट वैल्यू का एक सेल मिलता है जहां पर वो एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। सो 5x5 लेना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 4x4 का सपोज हम ले लें, अगेन 4x4 में भी ऐसे कोई भी ब्लॉक नहीं बनेगा जहां पर एंटिटी सब जगह प्रेजेंट हो। इसके बाद हम एक लेवल और नीचे जाते हैं, 3x3 का लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेड कलर के स्क्वायर से उसकी पोजीशन आप देख सकते हैं सेल वैल्यूज में। यहाँ पर 3x3 का इस तरीके से सबसे पहला एक बॉक्स बना लिया जाता है। उससे हायर लेवल का कोई भी बॉक्स यहाँ पर नहीं बन सकता। तो पहला ब्लॉक कितने का बना? 9 पिक्सल्स का बना या 9 सेल्स का बना। उसके बाद देखेंगे क्या और कोई 3x3 का बॉक्स बन सकता है? तो और कोई 3x3 का बॉक्स बनता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक ऑप्शन यहाँ पर अगर आप नीचे जहाँ पर कर्सर हम रख रहे हैं वहां पर आएंगे तो अगेन यही प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक सेल ऐसा है जिसमें की वैल्यू नहीं है। सो 3x3 दूसरा बन नहीं सकता। उसके बाद अगले लेवल पर आएंगे 2x2 के बॉक्स पे, ठीक है। सो 2x2 के बॉक्स आप इस वाले फिगर में, सेल वैल्यूज वाले फिगर में देख सकते हैं, ब्राउन कलर से 2 बॉक्सेस बनाए गए जो कि 2x2 के साइज के आते हैं यहाँ पे। उसके बाद रेस्ट ऑफ द पिक्सल्स को आप देखेंगे वो सारे ऐसे हैं कि जहां पर कोई दूसरा बॉक्स बन नहीं सकता। सो बाकी सब बॉक्स साइज 1 की होगी, 1x1 की। इस तरीके से
ये ब्लॉक कोडिंग करी जाती है कि इसमें एंटिटी मॉडल में जो भी एंटिटी होती है उसके बॉक्सेस बनाए जाते हैं। उसके बाद में फाइनली फाइल स्ट्रक्चर को देखिए, ब्लॉक साइज 1, 4, 9, 1x1 पे 1, 2x2 पे 4 और 3x3 पे 9। कितने बने हैं आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे ग्रीन वाला काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। अगला है सेल कोऑर्डिनेट, हर एक सेल का आपको कोऑर्डिनेट वैल्यू लिखना पड़ेगा। अगला ब्लॉक साइज 2x2 दैट इज 4, 4 के 2 हैं बॉक्सेस, यहाँ पर 2 आप ब्राउन कलर के बॉक्सेस देख सकते हो। उसके बाद सेल कोऑर्डिनेट, सबका सेल कोऑर्डिनेट नहीं लिखा जाता, केवल टॉप लेफ्ट का लिखा जाता है। ओके, सो पहले वाले के लिए टॉप लेफ्ट है 8,3, दूसरे वाले के लिए टॉप लेफ्ट अगर हम देखें सो इट इज 7,5। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिए, कभी कभी ये कंफ्यूजन करते हो जाता है स्टूडेंट को। जब आप x, y लिखते हैं, x रो से मिलता है कि कॉलम से मिलता है? रो। रो से मिलता है। तो कॉलम से मैम। यहाँ 2 आंसर आ रहे हैं। कॉलम। जो रो कह रहे हैं वो फिर से चेक करें, रो से आ रहा है कि कॉलम से आ रहा है? मैम कॉलम से आ रहा है। अभी भी कोई है रो के लिए? सो दिस वन इज अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन कि आप रो है कि कॉलम है। इसको थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी। x की वैल्यू हमेशा कॉलम से आती है ना। आप देखो इसको, ये इससे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला जो डिस्कशन हुआ था वहां पे भी यही कंफ्यूजन था, यहाँ पे भी वही कंफ्यूजन है। यहाँ पर आप सेम चीज समझाएंगे। अगर आप अलोंग दी एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, हम अपना कर्सर अलोंग दी एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, क्या रो की वैल्यू बदल रही है? नहीं, रो की वैल्यू 1 है पूरे में, लेकिन किसकी वैल्यू बदल रही है? कॉलम की वैल्यू हो रही है 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं अपना कर्सर को, ठीक है, वर्टिकली मूव कर रहे हैं, इसमें देखिए कॉलम की वैल्यू क्या रह रही है? पूरे में 1 रह रही है, लेकिन रो की वैल्यू है वो बदल रही है बार बार, 1 2 3 4 अप टू 10। तो ये जो रो होता है वो y एक्सिस के लिए होता है और जो कॉलम होता है वो x के लिए होता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि किस में आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर वही कोऑर्डिनेट में 5,2 3x3 का है, तो उसका क्या हो जाएगा 5,2। समझ में आ गया ब्लॉक कोडिंग कैसे करनी है? इसको एक बार बाकी रेस्ट ऑफ बाकी का मत ध्यान दीजिए, केवल एंटिटी मॉडल को देखते हुए अपने एंड पर इसको करिए। करिए उसको। एंटिटी मॉडल आपके सामने है। इसका अगला फाइल स्ट्रक्चर बनाइए, किस तरीके से इसके ब्लॉक बनेंगे और किस तरीके से फाइल स्ट्रक्चर बनेगा। मैम यस, मैम आया नहीं मैम समझ में। स्क्रीन पर देख रहे हैं एंटिटी मॉडल। जी मैम। ये एक एंटिटी मॉडल आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपके सामने आपको काम क्या करना होता है, ये सब चीजें जब आपके पास में पॉलीगन डेटा होता है तब यूज होता है, एरिया जब होता है तब इसमें ये सब यूज होता है। पॉइंट लाइन में इतना इसका यूजफुल नहीं रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पूरे के पूरे डेटा को हर एक रो हर एक कॉलम की वैल्यू स्टोर करने की बजाय हम जो एंटिटी है हमारी, केवल उसको हम स्टोर करते हैं। उसको कैसे स्टोर करते हैं?
उसको स्टोर करने के लिए एक तरीका ये है कि हम पूरी की पूरी एंटिटी को ब्लॉक्स में, बॉक्स के फॉर्म में, स्क्वायर बॉक्सेस के फॉर्म में ले जाएं। अब जब हम स्क्वायर बॉक्स की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं जो कि उस एंटिटी को कंप्लीटली कवर कर लें। अब आता है कि बॉक्स की साइज क्या रहेगी। ठीक है, आप अगर एंटिटी का नंबर ऑफ कॉलम देखें 1 2 3 4 5, मैक्सिमम लेंथ इसकी है, विड्थ जो है वो 6 कॉलम की यहाँ पर है। लेकिन क्या आप 6x6 का कोई बॉक्स यहाँ पर बना सकते हैं? अगर आप इसको थोड़ा सा देखें कि अगर हम इस पूरे इसको लेते हुए अगर 6x6 का इसके अराउंड बॉक्स ड्रॉ कर देंगे तो उस बॉक्स में कई सारी ऐसी सेल आ जाएंगी जहां पर एंटिटी नहीं है। तो हम जो बॉक्स ऐसा ही बनाते हैं जिसमें कि एंटिटी प्रेजेंट हो, तो 6x6 का तो यहाँ नहीं बन सकता। अगला लेवल आइए 5x5 का, सेम प्रॉब्लम आपको मिलेगी। 5x5 का अगर कोई बॉक्स बना देंगे आप तो उसमें कुछ ऐसे पिक्सेल्स होंगे, कुछ ऐसे सेल होंगे जहां पर वैल्यू रहेगी और कुछ ऐसे होंगे जहां पर वैल्यू नहीं होगी। अगला लेवल 4x4 का आता है। सेम प्रॉब्लम आप 4x4 में भी देखेंगे। यहाँ पर एक ही सेल, अगर आप इस तरीके से 4x4 को लेंगे, ठीक है, यहाँ से आप 4x4 लेना शुरू कर रहे हैं तो एक सेल बच जा रही है जहां पर की एंटिटी नहीं है। तो एक सेल ऐसी आ रही है जहां एंटिटी नहीं है, तो इस कारण से 4x4 भी हमारा नहीं हो पाएगा। अगला लेवल देखते हैं 3x3 का। तो 3x3 बनाने के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक इसका फिक्स्ड सोल्यूशन होगा, वेरिएबल सोल्यूशन है। आपने कहाँ 3x3 का बनाया उसके हिसाब से आगे का प्रोसेस डिपेंड करता है। यहाँ देखिए 3x3 बॉक्स बनाने के आपके पास में कई सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से हमने कर्सर रखा हुआ है अभी। दूसरा ऑप्शन है आप इसके एडजेसेंट वाले से स्टार्ट करा सकते हैं। ठीक है, अगले यहाँ से आप स्टार्ट करा सकते हैं। ये कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं कि आप यहाँ से भी स्टार्ट करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका कहता है कि आप यहाँ से भी स्टार्ट करा सकते हैं। बॉक्स बना ही देते हैं। तो एक बॉक्स आपका इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, दूसरा बॉक्स इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, तीसरा बॉक्स ऐसे भी बन सकता है। फोर्थ बॉक्स एक ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप ये बॉक्स यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपके सामने हमने बना कर दिखाया, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में। तो कोई एक ऑप्शन आप लेकर के चलेंगे। यहाँ पर सपोज हमने ये रेड वाला ऑप्शन ले लिया। ठीक है, ये हमने रेड वाला ये बॉक्स ले लिया। इसके सिवा अगर एक पर एक ये रेड कलर का बॉक्स 3x3 का बन गया, क्या इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है? सो आंसर है नहीं। अगर आप दूसरे ऑप्शन पे जाने की कोशिश करेंगे, सपोज हमने बोला कि हमें ये वाला चाहिए, ठीक है, हमने एक इस वाले को लेने की कोशिश करी, ठीक है, तब बताइए क्या होगा? यहाँ पर एक ऐसी सेल आ जाएगी जिसमें कि वो एंटिटी प्रेजेंट ही नहीं थी, है ना। एक ऐसी आ जाएगी सेल जिसमें कि वो एंटिटी प्रेजेंट नहीं थी। इस कारण से 3x3 का कोई बॉक्स और नहीं बन सकता। अब आते हैं अगले बॉक्सेस की ओर। 2x2 के कहाँ कहाँ बन सकते हैं? तो हमें यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिखते हैं। एक ऑप्शन तो
ये दिखा? और दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है? एक ये दिख रहा है। इसमें भी आप अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं, कोई भी दो सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पर इस तरीके से दो आपने स्क्वायर बॉक्स बना लिए, चाहे इसको यहाँ पर रख लीजिए, चाहे इसको बगल में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो स्क्वायर बॉक्सेस दो दो सेल के 2x2 सेल के बन गए। रिमेनिंग में देखिए केवल सिंगल सेल के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ पर डिवीजन का काम डन हो गया। अगला स्टेप अब क्या चलता है? अगला स्टेप फाइल स्ट्रक्चर बनाने का आता है। फाइल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फाइल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ तक का प्रोसेस तो आपको बता दिया, बीच वाले तक का। थर्ड वाले में फाइल स्ट्रक्चर में देखिए आपको 3 कॉलम बनते हैं, जिसमें पहले कॉलम में आप ब्लॉक साइज लिखते हैं, दूसरे कॉलम में कितने उस तरीके के ब्लॉक्स हैं उनकी संख्या लिखते हैं, और थर्ड कॉलम में आप उनके टॉप लेफ्ट कॉर्नर का जो कोऑर्डिनेट है वो लिखते हैं। जब 1x1 का है, सिंगल सेल है, ऐसे कितने ग्रीन कलर से इसको स्क्रीन पर दिखाया गया है। सो 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल है, तो यहाँ पर नंबर 7 लिख दिया गया। इनका कोऑर्डिनेट क्या है आपने पढ़ना आता है, आपको पहले कॉलम पढ़ना होगा और फिर रो। तो x, y कैसे बनेगा? 4, 2 4, 3 8, 2 देन 6, 5 6, 6 6, 7 एंड 7, 7। ये 1x1 के लिए बन गया। अगला 2x2 का देखिए, दो यहाँ पर अवेलेबल है 2x2 के, और इनके कोऑर्डिनेट देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर का दे लेंगे। पहले वाले के लिए इट्स 8, 3 एंड दूसरे वाले के लिए इट्स 7, 5। ठीक है, उसके बाद में ये रेड कलर वाला बॉक्स आता है 3x3 का, इसका देखिए क्या है कोऑर्डिनेट 5, 2। सन में आ गया। Ma'am, one thing I have to ask. Ma'am, Yes. Ma'am, like we have made a 2, 1 from 8, 3 corners. If I want to make suppose 2, 2 square block, not from 7, 5. Instead of that, if I start from 6, 5, will 6, that be okay? Yes, okay. Ma'am, will There's that no be okay? problem. I'm just shifting the 2, 2 leftward and that single 1, 1 rightward. Will that be okay, ma'am? You can, this 8, 3, you cannot do anything in that one, because if you Yes, shift this 8, 3 towards the left, it will start overlapping with the 3x3 red color box. Okay, so it is not possible to shift 8, 3, the very first box. But if you come to the second box, which is located at 7, 5, and if you shift it towards the green, which is 6, 5, okay, if you shift it towards this side, then again there is no problem. Like I have shown you this one, okay, like this. Okay, so what you are saying, I think so you want to make your boxes like this, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exactly. I have made that only. No problem, no problem with that. But Okay. the thing is, they should not intersect each other. They should be non-overlapping. Yes, ma'am. Thank Any you. other question? Ma'am, Yes. there were multiple possibilities, right? Yes. So how will we know it is the minimum bit required to encode this one? I'm not getting your question. Yes, there are multiple means options, multiple choices, multiple possibilities through which you can create the boxes over here. Yes. So suppose there are three possibilities. So Yes. how will we know the minimum bit required to represent this coding is minimum? Like
So suppose this data should be stored in bit, right? So how we do know this is the minimum data required to encode this one? No, there is nothing like that. One thing that means this is not in this particular example case, but yes, one thing that you can check is that like So whether your our choice is not your whether your choice is affecting the number of boxes or not. Okay, like in this case, there is no impact of that one. Even if you shift the 2x2 box to the another position, there is no effect on a 1x1 box. The only thing is we try to make the largest possible boxes that through this process. Okay, but the choice there is means you can take any of the choice over here. मैम Yes. मैम हम हमेशा केवल टॉप लेफ्ट सेल के ही कोऑर्डिनेट्स लेंगे जब 2x2 या फिर 3x2 3x3 का लेंगे तब आप केवल टॉप लेफ्ट का लेंगे, बाकी तो वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप मेंशन कर रहे हैं 9 है, तो मीन्स 3x3 का ही है बॉक्स। तो मीन्स अगर आपको भी अगर कोई दे दे 5,2 हमने बोला और बोला कि 3x3 का बॉक्स है, तो आप उसका जो एक्सटेंट है, मतलब कितना बड़ा वो बॉक्स बन रहा है, वो आप अपने आप निकाल लेंगे। इन जनरल भी जब भी हम लोग कोई भी, जैसे कि जीआईएस में जब भी हम काम करते हैं, कॉमन प्रोसेस होता है कि हम अपने स्टडी एरिया को डिफाइन करते हैं, है ना। जीआईएस का कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो किसी जगह के लिए होता है, किसी लोकेशन पे काम करना पड़ता है। तो हम अपना लोकेशन भी, जैसे सपोज हमारा कोई स्टडी एरिया प्रयागराज है, तो हमें वहाँ का लोकेशन स्पेसिफाई करना होगा। तो स्टडी एरिया का तो मैप हम बनाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। स्टडी एरिया का तो यहाँ पर प्रयागराज का पूरा मैप बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका पूरा कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे। हमने स्टडी एरिया का मैप बना दिया और उसका एक्सटेंड भी जब हम लिखते हैं, इस वाले पेपर में शायद नहीं लिखा है। एक और एग्जांपल, जैसे एक स्टडी परफॉर्म करी गई, ठीक है। जैसे स्टडी एरिया 1 है, ये हमारी दिल्ली पर स्टडी हो रही है। तो आप इस पॉलीगन को देखिए, ये पूरे दिल्ली को कवर कर रहा है, एक इरेगुलर शेप पॉलीगन बन रहा है हमारे स्टडी एरिया का। लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा है, द न्यू दिल्ली सिटी इज स्ट्रेच फ्रॉम 28 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ टू 28 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड का, सॉरी लैटिट्यूड का एक्सटेंड देते हैं, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड का भी एक्सटेंड देते हैं। कहने का मतलब ये कि एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जीआईएस में कि आपको जब भी एक्सटेंड देना होता है तो आप पूरा का पूरा डिफाइन हमेशा नहीं करते हो, ज्यादातर टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट को बता देते हैं। या इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस टॉपिक को ब्लॉक कोडिंग की बात करें, तो अगर आप टॉप लेफ्ट केवल दे दो और ब्लॉक साइज दे करके ऑलरेडी दिया हुआ है आपने, तो ये ऑटोमेटिकली कितने सेल्स यहाँ पर रहेंगे ये पता लग जाएगा। ओके, ओके देन अब 10 मिनट्स का हम ब्रेक दे रहे हैं। सो 12:20 पर हम वापस से इसका आगे का सेक्शन रिज्यूम करेंगे। तो 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू। मैम अबाउट द टेस्ट होगा, टेस्ट भी होगा अभी। ओके
let's start the class. Before starting the next topic, there's one information to all of you. From this 9th of October up to 17th of October, there is mid-semester break. Okay. So there will not be any classes in the next week. Some of the tutorials or assignments will be given to you. Okay. So is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, so in the next week there will be no classes, and from 18th of October there will be regular classes. And the assignments that were given to you, you have to submit those assignments during this mid-semester break. Now, coming back to the topic, chain coding, we have learned two types of compression. First one was run length encoding, second one was block coding. And the third one is chain coding. Chain coding is again used for polygon data, and in this case the outside boundary of the polygon is stored. Okay. In case of chain encoding, how we start, again the solution will be, means it will vary from one person to another because the starting point can be different. So first of all, we need to give the start point. As you can see in the file structure, the start point is 4,3. Okay. And then number of entities is 1. After that, you have to write down the direction and number of cells that you will move in this direction. So first of all, the starting point will be 4,3. So in north direction, 1, 2 cells. Okay. Once you have moved 2 cells, the next one is 1, 2, 3, 4. 4 cells in east direction. So E, 4. Then south 1. Then east 1. Again south 1. Then west 1. Then south 1, 2. Then west 1. Then south 1. And so on. You have to move in this way. So this is how this chain encoding works. So just see the solution again, and if there is any confusion, you can ask. See the file structure, how it is created, how the values are given over there. First, there is direction, and after the direction, there will be number of cells that you need to move in that direction. मैम फिर से बार एक्सप्लेन कर दीजिए. In chain coding, you need to take, first of all, you need to take the starting position. You can take any pixel value as a starting position, any cell location as the starting value. So like in this example, 4,3 is taken as the starting value. This is what the location I have placed my cursor at 4,3. This one is the starting position, then number of entities is 1. Then in the next line, what you need to write, you need to write down the direction, and direction will be followed by number of cells in that direction. So the very first location is 4,3. So you need to move 2 cells. This is a little bit different for the very first entry. You have to take 2 cells in the north direction. Okay. Now, in which direction you have to move? You have to move in the east direction. How many cells in the east direction? 4 cells in the east direction. So it is E, 4. So once you have reached at this position, then 1 cell towards the south, then 1 cell towards the east, then 1 cell towards south, then 1 cell towards west, then 2 cells towards south, then 1 cell towards west, then 1 cell towards south, then 1 cell towards west, then 3 cells in north, 1 in west, 1
in north, and again last one is in west. So this is how you will move along the boundary. Just around the boundary you have to move. You have to take the starting position, and then after that you just need to write down the direction and number of cells that need to be moved along that direction. In this example, north, south, east, west, NS, EW is used. But when we store it inside the computer, instead of letters, this one is just for the, telling you in the direction purpose. But when this information is stored inside the computer, instead of using north, south, east, west, they will use numeric value for this purpose. Is it clear by now? Yes, ma'am. Okay. Shall I move to the Ma'am? next one? Yes. नॉर्थ के 2 स्टार्टिंग वाला और वेस्ट का 1 लास्ट वाला मैम ओवरलैप नहीं करेगा मैम? करेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि जो थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है, तभी जी, क्लोज ओके मैम। पॉलीगन बनेगा, है ना, इसी कारण से उसको ओवरलैप कराया जा रहा है। Ma'am, यस, so is it only applicable for polygon? Because as the Yes. chain name suggests. यस, Okay, ma'am. okay, then I am moving to the next one. It is quad tree. Okay, this structure is called quad tree structure. This one is the fourth one. First I am reading the theory, then I will explain you what is happening. Basically, as the name suggests, when we say a quad tree, we are dividing the raster data into 4 quadrants. As you can see on the screen, this raster data is divided into 4 quadrants, 0, 1, 2, 3. Recursively, there will be a division until all the cell values inside a quadrant are same. Okay. So let's see the theory first, and then I will explain you with the help of example. One of the advantages of raster data model is that each cell can be subdivided into smaller cells of the same shape and orientation. This unique feature of the raster data model has produced a range of innovative data storage and data reduction models that are based on regularly subdividing space. The most popular of these is the area or region quad tree. Quad trees may be thought of as a raster data structure with a variable spatial resolution. Raster cell sizes are combined and adjusted within the data layer to fit into each specific area feature. The quad tree works on the principle of recursively subdividing the cells in a raster image into quads or quarters. The subdivision process continues until each cell in the image can be classed as having the spatial entity either present or absent within the bounds of its geographical domain. The number of subdivisions required to represent an entity will be a trade-off between the complexity of the feature and the dimensions of the smallest grid cell. So let's see how this quad tree works. On the top left side, you can see a raster data, okay, and some entities present over here in the blue color. Now, what you need to do, since all the cells values are not same, there are some in white color, some in blue color. So what you will do, you will divide it into 4 equal parts. This is what the quadrant is, that when you divide a space into 4 equal parts, so here again it is an 8 cross 8 raster. So this 8 cross 8 raster is divided into 4 cross 4 raster. As you can see on the right side, quad tree is written over here. So this space is divided into 4, 0, 1, 2, 3. Now if you check the quadrant 0, all the cell values are same. 1, all the cell values are same. 2, all the cell values are same. But when you are going into the third, or you can say fourth, here the starting value is 0. So that's why they are writing it 3. So in the last quadrant, you will find all the values are not same. Some values are in blue and some are in white. Again, you have to divide this last quadrant into 4 parts. Okay, and see, this is smaller 2 cross 2
all the values are same. In this 2 cross 2, next 2 cross 2, values are different. In next one, all the values are same, and in the last one, all the values are same. So for 3 quadrant, 0, 2, 3, it's okay. But for this quadrant, okay, for this quadrant, the values are not same. So it will be further divided into 1 cross 1 quadrant. Now, when we go for a 1 cross 1, it is the smallest, so there is no problem. In this case, 0, 1, this second one is getting different values, the third one is all same. This is how you need to divide the raster space. How you will do this thing? You will recursively divide the space into quadrant until all the values inside a quadrant are same. This is what the procedure is. So if you see this recursive division, in the very first step, in the quadrant number 0, 1, 2, all the values are same, but in the fourth quadrant, quadrant number 3, in the fourth quadrant, the values are different. So you will not divide the quadrant number 0, 1, 2, they will taken as it is, but the last quadrant will be divided into 4 parts. Again, the first, third and fourth quadrant having the same values, but the second quadrant is having a different values. Therefore, it has been divided again. Okay, so this is one part. Yes, I hope this one you can ask. Okay, now the next part is, this is the division part. The next part is we need to create a tree structure. So in the bottom, you can see a figure. This is called the tree structure over here. Now in the computer science, when we say tree, the tree is reverse, upside down, means root is at the top, the leaves are at the bottom. Okay. In the real world, the tree, in the real world, the root of the tree is at the bottom, the leaves are at the top. But in the computer science, when we talk about the data structure, the tree data structure is in reverse sequence. The root will be at the top and the leaves will be at the bottom. Now see, the very first black color node is showing the root node. Okay. This root node is showing 8 cross 8, this complete 8 cross 8 matrix. Now this one is divided into 4 parts. So you can see 4 children are coming from the root node. 0, 1, 2 are okay. But the last one is again a parent child, a parent. And from this one, 4 nodes are coming out. Okay. First one is having all the same values, so it will not be divided further. The second one is having different values, therefore it is further getting divided into 4 parts, and rest of them are same. Okay, so this is how this division is taking place. So this one is all same. Okay, if you start, the 8 cross 8 does not have all the cell as the same value, therefore it will be divided into 4 parts. So it is 0, 1, 2, and then again the last one is getting divided. 0 is having all the same value, 1 is having all the same value, 2 is having all the same value, but the third one is having a different values. So there is further nodes that are coming out from this particular node. This is how this whole tree structure is created over here. Is it okay? मैम Yes. मैम ये जो 0, 1, 2, 3 नंबरिंग है वो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं या इसी तरह से? यहाँ पर जो नेविगेशन का होता है वो डायरेक्शन देखिए 2 तरीके से पॉसिबल होती है। एक तो ये Z ऑर्डर कहा जाता है, जिसमें इस एग्जांपल में नेविगेट किया गया है, इसको Z सीक्वेंस कहा जाता है, 0, 1, 2, 3। इसको अगर आप कॉपी पर ड्रॉ करेंगे, इसको अगर हम मिलाते हुए बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सीक्वेंस बनता है वो Z सीक्वेंस बनता है। एक इसमें पाई सीक्वेंस भी कहा क्या बनता है, हिल्बर्ट सीक्वेंस इसको कहते हैं। इसमें 0, 1, 3, 2 पे आते हैं, ठीक है, 0, 1, 3, 2 पर आया जाता है। तो यहाँ 2 सीक्वेंस पॉसिबल होता है, एक Z के फॉर्म में, 0, 1, 2, 3 के फॉर्म में, एक पाई के फॉर्म में, यानी कि 0, 1, 3, 2।
ठीक है, यही 2 सीक्वेंस होते हैं केवल। अब क्वेश्चन आता है कि हम किससे करें। अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन है कि आप Z सीक्वेंस में जाइए या पाई सीक्वेंस में जाइए, अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन है क्वेश्चन में तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए। क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, आप उसमें लिख दीजिए कि हम इस सीक्वेंस में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपने जो सीक्वेंस लिया और जब कॉपी करेक्शन होगी आपकी, तो वो उसी सीक्वेंस में आपका चेक किया जाएगा। दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही मेथड है, अनलेस अनटिल आप उसको स्पेसिफाई या तो खुद से करें, या दूसरा चीज अगर क्वेश्चन में दे दिया गया कि इसको Z सीक्वेंस में नेविगेट करिए या पाई सीक्वेंस में नेविगेट करिए, तो आप उसी सीक्वेंस में फिर मूव करेंगे। तो ये 2 तो मैम ऑप्शन होते हैं। हाँ पूछे। मैम पाई सीक्वेंस में देन नंबरिंग होगी वो नीचे 0, फिर ऊपर टॉप पे 1, फिर टॉप राइट में 2 एंड फिर लास्ट में 3। सीक्वेंस में केवल सेम जो अभी इसमें आप देख रहे हो क्वार्टरी में 0 वहीं रहेगा, 1 वहीं रहेगा। बस जहां पर 3 है वहां पर 2 आ जाएगा, और जहां पर 2 है वहां पर 3 आ जाएगा। एक मिनट मैम क्लॉकवाइज मतलब बता दे, एक मिनट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो अभी हमने बनाया है ये Z सीक्वेंस होता है। तो Z सीक्वेंस में आप कैसे करेंगे, 0 से 1 पे जाएंगे, 1 से 2 पे जाएंगे और 2 से 3 पे जाएंगे। तो इसका सीक्वेंस देखिए, नेविगेशन सीक्वेंस ये Z का शेप दे रहा है, तो दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं ये Z सीक्वेंस में मूव कर रहा है। अगला जो पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं वो पाई सीक्वेंस की बता रहे हैं। पाई सीक्वेंस में क्या होगा, बस इतना अंतर होगा कि ये ऐसे ना आकर के ऐसे आ जाएगा। कलर थोड़ा सा ठीक से देखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये अगर ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, 0 से 1 पे जाएगा, 1 से ये 3 पे जाएगा और 3 से ये 2 पे जाएगा। ये सीक्वेंस जब होता है, ये इसको पाई सीक्वेंस बोला जा रहा है। तो या तो Z में मूव करेंगे या फिर इस दूसरे ऑप्शन में मूव करेंगे। ठीक है, हेलो मैम। यस मैम अगर बड़े ब्लॉक पे अगर हिल्बर्ट सीक्वेंस का यूज करेंगे तो जो छोटा ब्लॉक होगा ब्लॉक 3 उस पे भी वही करना पड़ेगा कि जेड सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं फिर? नहीं, यूनिफॉर्म यूज होता है। ऐसा नहीं कि एक जगह Z यूज कर दिया एक जगह पाई यूज कर दिया। थ्रू जितना भी पूरा प्रोसेस होगा नेविगेशन का वो पूरा सेम होगा। एक एग्जांपल है, आपके सामने क्वाड्री ऑलरेडी डिवाइड करके दिया गया है।
ठीक है, सॉरी, एक एंटिटी मॉडल दिया गया है। अब इससे क्वाड ट्री स्ट्रक्चर बनाइए। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, 5 मिनट्स टाइम है, तो इसको जल्दी से करिए। इस स्ट्रक्चर से क्वाड ट्री स्ट्रक्चर बनाइए। ये एक रास्टर डेटा है, ब्लैक कलर सपोज जहां पर एंटिटी प्रेजेंट है, व्हाइट कलर जहां एंटिटी प्रेजेंट नहीं है। इससे आप क्वाड ट्री स्ट्रक्चर को जनरेट कराइए। This is the solution. Check whether all of you getting the same solution or not. So that's it from my side for today. And soon the quiz will pop up on your screen at 12:45. You will have 25 minutes for the quiz. Submit your quiz on time. Okay? Make sure that you would submit your quiz on time.